Hello students, I am Dr. Ashish Kumar Suri. Welcome to revision summary part 4 of unit 5 of management, which is business finance. In this session, we will again discuss a very important topic of this unit, which is derivatives. You can expect at least one question or maybe 1 to 2 questions from this topic. The expected marks will be 1 to 2 and the difficulty level may range from moderate to difficult. So students, this topic is a core finance topic. So I request you to please understand it very carefully. Listen to all the points very carefully. Derivatives. What do we mean by in general with this word derivative? Derivative means derived instruments or commodities. ऐसी कोई चीज जिसकी वैल्यू या जिसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड करता है उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव और derived instruments or commodities. Anything whose value or existence depends on the existence of some other commodity or instrument, that is known as derivative. So derivative is a product whose value is derived from and is dependent on the value of an underlying asset, such as a stock, bond, commodity, currencies, interest rate, or etc. Derivative exists in various fields. We have stock derivatives, we have derivatives of bonds, commodities, currencies, interest rate, etc. So for example, equity derivatives. So equity derivatives, their value, their existence depend on the existence of their underlying asset, which is equity. अंडरलाइंग असेट का मतलब वो चीज जिस पर डेरिवेटिव का वैल्यू या एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है. सो फॉर एग्जांपल एक इक्विटी शेयर है इन्फोसिस. सो इन्फोसिस का एक इक्विटी शेयर भी है और इन्फोसिस का डेरिवेटिव भी है. डेरिवेटिव ओके. सो इस डेरिवेटिव का वैल्यू, इस डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस एंड इवन वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? इन्फोसिस के इक्विटी शेयर पर. यानी कि इक्विटी शेयर के प्राइस में जो मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इसके डेरिवेटिव के प्राइस में भी मूवमेंट्स होंगे. अगर इन्फोसिस अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है और उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से भी बेटर आता है तो उसके इक्विटी शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंगली उसके डेरिवेटिव का प्राइस भी इंक्रीज होगा. लेकिन अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बिलो आता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है या कंपनी लॉस डिक्लेयर करती है तो उस केस में इक्विटी शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके डेरिवेटिव का प्राइस भी डाउन होगा. सो द एग्जिस्टेंस एंड इवन द प्राइस ऑफ दिस डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन इक्विटी शेयर. सो दिस इक्विटी शेयर इज व्हाट द अंडरलाइंग असेट, क्योंकि इसके एग्जिस्टेंस और इसके प्राइस पर डेरिवेटिव का प्राइस डिपेंड करता है. So this equity share is known as the underlying asset and these are what the derivative of this equity share. So derivative is an instrument whose existence and whose value depend on the value and existence of an underlying asset or any commodity. So we are discussing here financial derivatives. हम कौन से derivative discuss कर रहे हैं? Financial derivatives. We have commodity derivative also, we have derivatives of metals also and various other instruments. Here we are discussing financial derivatives. So financial derivatives are used for several purposes. क्या uses हैं derivative के? Derivatives are used for risk management, derivatives are used for hedging, derivatives are used for arbitrage between market. Arbitrage means a risk-free activity. It is based on the concept of one price and then speculators who predict the market based on their experience, who predict the movement according to their experience and then trade in the underlying assets and their derivative. So derivatives are used for risk management, for hedging, for arbitrage and for speculation. Remember, these are the different uses of derivatives. The value of the financial derivative derives from the price of underlying item or the reference price. So if the underlying item is an equity, they are known as equity derivative. If the underlying item is a commodity, it is known as commodity derivative.
If the underlying item is an interest rate, it is called interest rate derivatives, so on. Now there are various types of derivatives. So these are forward contracts, future contracts, options and swaps. Generally we refer future and option as the derivative. These are the most important type of derivative. So sometimes derivative market is also known as F&O market. F&O means future and option market. Okay. So, but these are the different types of derivative. Generally what we discuss is future and option. So derivative market is also sometimes called F&O or future and option market. Forward contract. Forward contracts are non-standardized and customized contract. It is a customized contract between two parties to buy or sell an asset at a specified price agreed upon today. A specified price agreed upon today on a future date. Forward contracts do not trade on centralized exchange and are therefore regarded as OTC, over the counter इंस्ट्रूमेंट्स. सो व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट. वाई कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज हम इसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्वांटिटी हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं. इट इज नॉट डिसाइडेड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी. द पार्टीज themselves कैन डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी and can change and make changes in the contract. That's why they are customized contract. So it is a customized contract between two parties to buy or sell. One party will be the buyer, another party will be the seller. To buy or sell an asset at a specified price. We are deciding the price today. Okay, we are deciding the price today, but the delivery will occur on a future date. But the delivery will occur on a future date. For example, there are two parties, a buyer and a seller. Okay, so the seller and buyer, these two parties agreed to sell a piece of land. So the seller agreed to sell the piece of land to the buyer. Okay, but the transfer of the ownership will occur say 1 month later. The ownership will occur, the transfer of ownership will occur 1 month later. But they have agreed upon the price today. Say they are ready to sell the piece of land say at 20 lakh rupees. So the price is decided today, the date is decided today, and the transfer of ownership will occur on the future date. So this is a forward contract, right? These now, because these contracts do not trade on any exchange or a central authority. So there is a risk which is known as default risk, or this is also called counterparty risk. Any party among the buyer and seller may default. Maybe the seller may refuse to sell the piece of land to the buyer, or maybe the buyer can refuse to buy the piece of land from the seller. And because there is no central authority, so none of the other party can approach to any central authority and can file a complaint, and the loss will not be compensated by any central authority. So that's why these are over the counter contracts, and they involve a high degree of counterparty or a default risk. The asset often traded in forward contracts includes commodities like grain, precious metals, oil, natural gas, etc. So these are the commodities which may trade on forward contracts or over the counter instruments. Then we have future contract. Future contracts are same as that of forward contract. In future contract also two parties agreed to buy or sell an asset at a specified price agreed upon today on a future date. But the difference is that future contracts trade on exchanges. Future contracts, because they trade on exchanges, so they are standardized contracts. That means the quantity is decided by the exchange. The parties involved, that is the buyer and the seller,
they cannot make any changes in the contract with their own wish. So they are standardized and customized contracts because they trade on stock exchanges, so they are standardized, and because no changes can be made by the parties themselves, so they are non-customized. Future contract is a legal agreement to buy or sell a particular commodity or asset at a predetermined price at a specified time in future. Future contracts are standardized while forward contracts are non-standardized for quality and quantity to facilitate trading on a future exchange. They are traded on exchanges. So in India, we have two national stock exchanges. One is BSE, another is NSE, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. So on both future contracts are traded on both the exchanges, but remember NSE holds the leadership in terms of trading of all derivative contracts, and it holds more than 99% of the total market. Its market share is more than 99%. This means BSE पे जो trading volumes हैं वो बहुत कम है, less than 1%, and NSE holds majority of the market share, or we can say almost the entire market, derivative market is held by NSE itself. These are the differences between forward and future contracts. Forward contract, it is a private agreement. Future contract, it is a legal agreement because it trades on an exchange. These are over the counter exchanges instrument and do not trade on stock exchanges. These contracts are traded on stock exchanges. These differences are very important. Okay, they are OTC instrument, involve counterparty risk or default risk. These are traded on stock exchanges, so they do not include any counterparty risk. If any of the party defaults, then in that case the exchange will fulfill the loss incurred by the another party. So these contracts, they do not involve counterparty risk. Forward contracts are non-standardized. These contracts are standardized contracts as they are specify the quality and quantity of the underlying asset. The quality, quantity, it cannot be changed by the parties involved. Now future trading is a zero sum game. What does it mean? It means that someone's profit is someone else's loss. अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट किसी दूसरे का नुकसान होगा. So a 100 rupee profit means a loss of 100 rupee, and their sum will be zero always. So future trading is a zero sum game. If somebody makes $1 million, somebody else loses $1 million. The downside risk is unlimited in future contract. This downside risk is unlimited. That means a party may incur any amount of risk. There is no limit on the losses incurred by any part involved on the any party. The risk in there on the buyer as well as the seller is unlimited. There is no limit on the risk. Okay, so the losses are unlimited, and that's why downside risk is unlimited. So future contracts are highly risky. Although you can make $1 million, but on the other hand you can lose $1 million also. Remember this, it is a zero sum game. Mark to market, it is a very important term. Mark to market means when an asset value are determined according to market prices at the end of each day in order to arrive at the profit or loss status of the party in future transactions. If mark to market position of a trader is negative, he has to deposit the difference amount with the broker. So what does it mean? Say you have purchased a stock at the rate of 100 rupee per share. Okay, if next day the market price increases to 102 rupee, then you are in a profit of 2 rupees. So your mark to market position is plus 2 rupee or a profit of 2 rupees. But on the other hand, if the price declines to 98 rupees,
then your mark to market position will be minus 2 rupee. That means you are in a loss of 2 rupees. So how we trade in future contract? We generally deposit a money, security money with the broker. We generally deposit a security money with the broker, which is known as margin. This margin may range from 15 to 20% generally of the total traded value. So this means that अगर आप 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उसका अगर मार्जिन 20% है तो आपको 20,000 रुपीज डिपॉजिट करने होंगे अपने ब्रोकर के पास में, ताकि ब्रोकर का रिस्क जीरो हो जाए, ब्रोकर का रिस्क खत्म हो जाए। नाउ अगर आपका मार्क टू मार्केट पोजीशन आपके मार्जिन मनी तक पहुंच जाता है, यानी कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने 20,000 रुपीज सबमिट डिपॉजिट किए ब्रोकर के पास में, और अगर आप फायदे में चल रहे हैं तब तो ब्रोकर का कोई नुकसान नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप नुकसान में चल रहे हैं और आपका नुकसान बढ़ते बढ़ते आपकी मार्जिन मनी तक पहुंच जाए तो देन ब्रोकर का रिस्क बढ़ जाता है। इन दैट केस ब्रोकर विल आस्क यू टू डिपॉजिट एक्स्ट्रा मार्जिन मनी, और if you do not deposit extra margin money, then broker may sell your contracts, right? So that's why mark to market positions are calculated so that your position with respect to market can be analyzed, and hence accordingly broker can take their margin decisions. So these are forward contracts, future contracts and forward contracts. In both the contracts the downside risk is unlimited, but future contracts are more safe as compared to forward contracts because they do not involve counterparty risk. But downside risk is there in both the cases, which is unlimited. Then we have option contracts. So option, as the name suggests, you have an option. What type of option do you enjoy? Option contracts offer another alternative for hedging interest rate and stock market risk, for speculating on changing bond and stock prices. Option contracts are bit more one-sided than future contracts. They allow someone to protect against a bad price movement without giving up all the benefits of a good price movement. So an option contracts, now listen very carefully, an option contract gives the holder, now who is holder I will tell you, gives the holder a right but not the obligation to buy or sell the underlying asset at a stated price known as strike price within the specific time frame. Now say for example आपने कोई option contract purchase किया at the rate of ₹100 per share, at the rate of ₹100 per share, okay. Now आपने buy किया, okay. In option contract there are two parties involved, one is holder and another is writer. Holder means buyer, holder means buyer of the contract, writer means seller of the contract. तो यहां पर हम buyer को बोलते हैं holder, seller को बोलते हैं writer. So say you are the holder of the option contract. So if you are the holder, then you enjoy a very exclusive right. Which type of right do you enjoy? Suppose आपने 100 रुपये पर शेयर पे कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया, so you are the holder. Now because you are holder, you are the buyer. This means अब अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा तब तो आपका बेनिफिट होगा, ओके. सपोज प्राइस 110 रुपीज हो गया तो आपका 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, सो यू विल एंजॉय प्रॉफिट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. लेकिन सपोज इसका प्राइस कम होके 90 रुपीज हो गया तो आपका 10 रुपीज का लॉसेस होंगे. लेकिन अगर आपसे ऐसा बोला जाए, क्या बोला जाए आपसे, आप इफ यू विल बी गिवन एन ऑप्शन दैट इफ प्राइस इंक्रीजेस देन यू एक्सरसाइज योर ऑप्शन. अगर प्राइस इंक्रीज हो तब तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेच दीजिए एंड एंजॉय ऑल द प्रॉफिट. लेकिन अगर प्राइस रिड्यूस होके 90 रुपीज हो जाए या उससे भी और कम हो जाए, देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट एंड लेट योर ऑप्शन गो अवे. तो आपको अपने ऑप्शन को बेचने की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है अपने ऑप्शन को बेचने का, आप उसको छोड़ दीजिए एंड इट विल बी स्क्वायर्ड ऑफ एंड यू विल इनकर नो लॉसेस. So what a wonderful option has been given to you that if you are incurring profit, if you are making profit, book your profits.
But if you are incurring losses, then you need not to worry, you will not incur any losses. So this option has been given, this exclusive option has been given to whom? It is given to holder of the option contract. But nothing is available free of cost in the world. So this option is again not available free of cost. So what you need to pay? You need to pay a premium money. Who need to pay? The holder. And to whom it will pay? To writer. So holder will pay a premium money to the writer. So for example, a 100 rupee option is available at a premium of say rupees 2 per share. So that means that the holder has to pay a premium of 2 rupees per share. To whom? To the writer. And by paying this premium of rupees 2 per share, the holder enjoys an exclusive right to either exercise his option or not to exercise. So there is no obligation on the holder of the option contract. लेकिन राइट तो होल्डर का प्रॉफिट तो अब अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि प्रॉफिट पर तो कोई बाउंडेशंस नहीं है, लेकिन होल्डर का लॉस लिमिटेड हो गया. कितना लॉस हुआ? बस प्रीमियम मनी का. ये तो देना ही पड़ेगा. ये होल्डर को वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको एक्सक्लूसिव राइट मिला है. तो अब ये प्रीमियम मनी वापस नहीं मिलेगा. तो केवल 2 रुपए देकर, अब अगर इसका प्राइस 90 रुपीज हो गया तो होल्डर का नुकसान कितना हुआ? केवल 2 रुपए पर शेयर, ओनली रुपीज 2 पर शेयर. और ये रुपीज 2 पर शेयर किसको मिले? राइटर को. सो दिस इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. एंड नाउ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन टर्म्स ऑफ लॉट्स. इक्विटी मार्केट में आप 1 शेयर बाय कर सकते हैं, 2 शेयर, एनी नंबर ऑफ शेयर यू कैन बाय इन इक्विटी मार्केट. बट इन डेरिवेटिव the contracts are traded in terms of lot, and the number of share in each lot is fixed. So say if the share of Infosys contains, a lot of Infosys contains 100 shares, that means you have to buy one lot or in multiple of lots. So if you are buying one lot, you have to buy 100, you are buying 100 shares. So in case if you are paying a premium of 2 rupee per share, then on the complete lot you have to pay a premium of 100 multiplied by 2, that means 200 rupees. So in derivative market we trade in terms of lots rather than in terms of number of shares. So if one lot contains 100 share, that means you have to buy or sell 100 shares at a time, right? Now there are two parties involved in option contract, as I told you, the buyer or the holder. Okay, so buyer has the exclusive right. So buyer enjoys unlimited profit, but loss is restricted to the amount of premium paid by him. On the other side, seller has unlimited losses. Seller has unlimited losses while his gain is limited, equal to the premium. राइट, सेलर को क्या मिल रहा है? राइटर को क्या मिल रहा है? राइटर को केवल प्रीमियम मनी मिल रहा है. तो उसका प्रॉफिट या गेन लिमिट हो गया, लेकिन उसका लॉसेस अनलिमिटेड है. तो अगेन समवंस प्रॉफिट इज समवंस गेन, रिमेंबर. सो द होल्डर हैज राइट, द राइटर हैज ऑब्लिगेशन. तो राइट किसके पास है? होल्डर के पास में है, रिमेंबर. और ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? ऑब्लिगेशन राइटर के ऊपर है. In return for getting this choice, the buyer pays the writer a premium, also known as price of the option. तो हम प्रीमियम को price of the option भी बोलते हैं. Now there are some terminologies in options. First is strike price or the exercise price. Strike price or exercise price, it is usually denoted by symbol X. It is the price at which you can buy the underlying security when exercising a call option. So वो प्राइस जिस पर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल कर रहे हैं, वो प्राइस होगा एक्सरसाइज प्राइस. सो इफ यू आर बाइंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट ₹100 per share, so this is what the strike price X at which you can buy, or the price at which buy or sell
the underlying asset. So the price at which you are buying or selling the underlying asset is the exercise price or the strike price. Spot price, now in cash market or means the in equity market इसका जो प्राइस चल रहा होगा, सो सपोज कि इक्विटी मार्केट में इसका प्राइस है 102 रुपीज, राइट? सो इट विल बी व्हाट द स्पॉट प्राइस. और एल्स से आपने आज एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 100 रुपीज पर, तो स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज. नाउ आफ्टर 5 डेज उसका मार्केट में करंट प्राइस कितना है? से 110 रुपीज. सो स्पॉट प्राइस विल बी 110 रुपीज. So it is the spot price is the current market price of the underlying security. Now premium, we have already discussed. The amount paid by the holder to the writer is what the premium. It is also called the income of the writer, क्योंकि writer को अब ये amount वापस नहीं देना है holder को, तो it is also the income of the writer. Now on the based on the exercise date, there are two types of option. American option and European option. So American option can be exercised any time up to the expiry date. वो ऑप्शन जो हम किसी भी डेट को एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी डेट को पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शंस. और अगर हम किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को केवल एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, then they are known as European options. So in India, remember in India, say today we are running in the month of say December 2020. So in India, the last Thursday of every month is the expiry date of the derivative contracts. Last Thursday of every month is the expiry date of all derivative contracts. So if you are holding American option, then you can exercise your option any day before the last Thursday. On the other hand, if you are holding a European option, you can exercise your option only on the last Thursday. So this means American options are more flexible as compared to European option. And remember, in India we deal in American options, right? Now there are two types of option contract. One is call option, another is put option. So call option gives the buyer right to buy. आप कौन सा right ले रहे हैं? Right to buy the underlying asset. Now if you are buying an underlying asset, this means that you have a bullish view. If you are buying a share at 100 rupee per share, okay, if you are buying a share at 100 rupee per share, then you expect that the price will increase in the future. So you have a bullish view. Bullish view means your expectation are that prices will increase. So the call option, the buyer of the call option has the bullish view. So if there is a buyer or holder, there will be a writer also. So buyer has the bullish view. Then if there is a buyer, there will be writer also. So buyer is buying the right to buy. So now, and he has a bullish view. So that means the writer expects that prices will decrease in the future. So he has a bearish view. That is, he expects that prices will go down in the coming future. So while buyer of the call option has bullish view, writer of the call option has bearish view. On the other hand, put option gives the buyer right to sell. Now you are buying the right to sell. So if you are selling an option contract, if you are buying the right to sell of an option contract at 100 rupee per share, then you expect, because you are buying the right to sell, so you expect that prices will go down in the future. So this means now the holder or the buyer of the put option, he has bearish view. He has a bearish view because he expects that prices will go down. So on the other hand, writer will have a bullish view.
बुलिश व्यू. सो रिमेंबर, कॉल ऑप्शन के बायर का बुलिश व्यू है, while राइटर हैज अ bearish व्यू. पुट ऑप्शन बायर होल्डर हैज अ bearish व्यू, while writer has a bullish view. So there are two types of option contract, call option and put option. Call option gives you the right to buy, put option gives you right to sell. Okay. Now based on the difference between the exercise or strike price and the spot price, there are three types of option contract. We have in the money option contract, we have out of the money option contract, and we have at the money option contract. So what are these three? In the money or ITM option contracts has, if it has intrinsic value. What is intrinsic value? I will tell you. A call option is in the money. A call option is in the money if the price of the underlying asset or spot price is higher than the option contract or strike price. अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा है एक्सरसाइज प्राइस से, देन कॉल ऑप्शन इज इन द मनी, ITM. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, बिकॉज द करंट प्राइस और द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस. सपोज स्पॉट प्राइस 102 है, स्ट्राइक प्राइस 100 है, तो अगर आप इस ऑप्शन को इमीडिएटली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होगा. ओके. ऑन दी अदर हैंड, पुट ऑप्शन इज इन दी मनी. पुट ऑप्शन का मतलब आपका अभी मैंने बताया बेरिश व्यू है. पुट ऑप्शन के केस में आपको फायदा कब होगा? जब स्पॉट प्राइस कम होगा स्ट्राइक प्राइस से, तब पुट ऑप्शन इन दी मनी होगा. सो रिमेंबर, कॉल ऑप्शन इज इन दी मनी व्हेन स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, while put option is in the money when spot price is less than the exercise price. Okay, so say 98 and 100, so spot price is less than strike price, so put option is in the money. Okay, then an option is called out of the money if it does not have intrinsic value. We will discuss this concept, intrinsic value. So this means that immediate exercise of the option will give a loss to the holder. So अब इसका उल्टा हो जाएगा. कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होगा अगर स्पॉट प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से, और पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होगा अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से. तो ये कंडीशन हो गई आपकी आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ओके, तो ये कॉल ऑप्शन की कंडीशन, ये पुट ऑप्शन की कंडीशन. देन एट द मनी, अगर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस अगर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस आपस में इक्वल हैं, देन बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस आर एट द मनी. दैट इज दे नीदर जनरेट एनी प्रॉफिट नॉर दे इनकर एनी लॉसेस टू द होल्डर. ओके, नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू इज in the money part of the option. Okay, intrinsic value is in the money part of the option contract. So only in the money option contract has an intrinsic value, while out of the money and at the money option have an intrinsic value of 0. Now what is intrinsic value? IV. Intrinsic value is the in the money part. In the money part. So now come to the in the money option contract. तो पहले तो ध्यान रखेंगे केवल in the money option contract का ही intrinsic value होता है. Out of the money और at the money option contract के लिए intrinsic value हमेशा 0 होगा. ओके, क्योंकि वो immediate एक्सरसाइज पे या तो लॉस इनकर हो रहा है या फिर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. नाउ क्योंकि इन दी मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, तो अब हम कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस के लिए बात करते हैं. कॉल ऑप्शन के केस में इन दी मनी कब होगा ऑप्शन? व्हेन स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस. सो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया? स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि 102 माइनस 100. सो 2 रुपीज इज व्हाट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द call option, while in case of put option intrinsic value will be exercise price minus spot price. उल्टा हो जाएगा,
exercise price minus spot price. So 100 minus 98, so 2 rupees. So call option का intrinsic value spot price minus exercise price, while put option का intrinsic value exercise price minus spot price. Now there is another term, time value. Time value of an option contract. Time value will be premium money minus the intrinsic value. Time value is premium money minus the intrinsic value. So आपने सपोज इस कॉल ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला 2 रुपीज, सपोज इसका प्रीमियम है 3 रुपीज, तो टाइम वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि -1 रुपी. ओके, तो फर्स्ट कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड देन सब्ट्रैक्ट दैट इंट्रिंसिक वैल्यू फ्रॉम द प्रीमियम मनी. दिस विल बी व्हाट द टाइम वैल्यू. ये फॉर्मूला सेम है फॉर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन टाइम वैल्यू के लिए सेम फॉर्मूला है फॉर कॉल एंड पुट ऑप्शन. So remember these terms, these are very important. Then option payoffs. Payoff means how much money, or we can say payoff is the in the money part of any option contract. So what is payoff for call option? In case of call option हम intrinsic value कैसे calculate करते हैं? Spot price minus strike price. So अगर spot price strike price से ज्यादा है, say spot price is 100 रुपी, strike price is 98 rupees for example, so the difference will be 2 rupees. So what is payoff? It is the maximum value of difference of spot price and strike price or 0. यानी कि अगर spot price strike price से ज्यादा है तो हमें difference कितना मिला 2. 2 को अब हम कंपेयर करेंगे 0 से. So out of 2 and 0 maximum value कितना हो गया 2, तो इसका पे ऑफ कितना हो जाएगा 2. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो गया स्पॉट प्राइस से, सो से स्पॉट प्राइस कॉल ऑप्शन का 100 है और स्ट्राइक प्राइस हो गया 102. अब इस केस में डिफरेंस कितना आ गया नेगेटिव, तो -2. नाउ वी विल कंपेयर -2 एंड 0. नाउ आउट ऑफ -2 एंड 0 मैक्सिमम वैल्यू इज 0, सो दैट मीन्स द पे ऑफ विल बी 0. Okay, so this is how we calculate the payoff. Now put option के लिए हम उल्टा करेंगे, हम स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस को माइनस करेंगे, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस. सो से स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज है, स्पॉट प्राइस 98 रुपीज है, डिफरेंस इज 2,0, मैक्सिमम वैल्यू इज 2, सो पे ऑफ विल बी ₹2. लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस 100 है, स्पॉट प्राइस 102 है, तो डिफरेंस इज -2, -2,0, द मैक्सिमम वैल्यू इज 0, सो पे ऑफ विल बी 0. तो कॉल ऑप्शन का पे ऑफ पॉजिटिव होगा अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, और नहीं तो पे ऑफ 0 होगा. अगर पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है तो तब पे ऑफ पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर कम है तो पे ऑफ 0 होगा. नाउ वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉल ऑप्शन प्रॉफिटेबल होगा कब, कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट? हमने अभी ऑप्शन का पे ऑफ कैलकुलेट किया. नाउ इस पे ऑफ वैल्यू में से हम प्रीमियम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सपोज पे ऑफ आपका आया +2 एंड प्रीमियम मनी इज से 3 रुपीज, तो यू आर इनकरिंग अ लॉस ऑफ -1 रुपी. और अगर आपका पे ऑफ आया 0 एंड प्रीमियम इज 3 रुपीज, सो यू आर इनकरिंग अ लॉस ऑफ -3 रुपीज. लेकिन से आपका पे ऑफ आया 5 रुपीज एंड योर प्रीमियम इज 3 रुपीज, सो यू आर इनकरिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज. सो कॉल ऑप्शन के लिए हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे कैसे? अभी हमने इसका पे ऑफ कैलकुलेट किया, अब हम इस पे ऑफ में से प्रीमियम मनी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सिमिलरली पुट ऑप्शन के लिए भी सेम, अभी हमने पे ऑफ कैलकुलेट किया. ओके, नाउ अब हम पे ऑफ में से प्रीमियम मनी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट.
सो प्रॉफिट और लॉस इज द पे ऑफ लेस द प्रीमियम मनी. पे ऑफ सब्ट्रैक्ट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीमियम मनी को, तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आ रही है तो हम लॉस इनकर कर रहे हैं. So this is the concept of derivatives. Okay, now we will see some of the questions from the previous year examination. What is the payoff at maturity? Payoff calculate करना है maturity पे. Long call, long call का मतलब buyer of the call और the holder of the call option. So holder के केस में हमें पता है bullish view, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तब फायदा होगा. Okay, now read the question again. What is the payoff at maturity of a long call? Long call below the strike price, यानी कि स्पॉट प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से. तो अभी देखिए हमने डिस्कस किया, अगर स्पॉट प्राइस कम होगा, ये स्पॉट प्राइस है, ये कम था स्ट्राइक प्राइस से, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा नेगेटिव. ओके, सो -2, मैक्सिमम वैल्यू इज 0. सो इस केस में पे ऑफ क्या हो जाएगा? 0. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0. क्योंकि कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे, होल्डर ऑफ द कॉल ऑप्शन की हम बात कर रहे थे, और होल्डर का पे ऑफ तब होगा जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा, तब पे ऑफ पॉजिटिव होगा. ओके, या हम बोलेंगे इन दी मनी होगा. लेकिन अभी तो स्पॉट प्राइस हमें दिया है कम स्ट्राइक प्राइस से, बिलो द स्ट्राइक प्राइस, सो इट विल हैव 0 पे ऑफ. The following two statements relate to financial derivative. Choose the correct code for the statements being correct or incorrect. When an option is allowed to exercise only on the maturity date, it is called an American option. Wrong. These options are called European options, which are allowed to exercise only on maturity date. American options are allowed to trade on or exercise on any date on or before the maturity date. So first statement is wrong. If the option holder does not lose or gain whether he exercise his option or buy or sell the asset from the market, the option is said to be at the money. Yes, it is true. In case of at the money option contract, spot price is equal to exercise price. So the holder neither lose nor gain anything. So this statement is correct. So statement 2 is correct, but 1 is correct. Code number 3 is the right answer of this question. A speculator will gain if he sells foreign currency under a forward contract when spot price is higher than the forward price. हम यहाँ पर सेलर की बात कर रहे हैं. सेलर का बियरिश व्यू होता है. हमें क्या दिया हुआ है? when spot price is higher than the forward price. ओके, स्पॉट प्राइस अगर फॉरवर्ड यानी कि स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, तो इन दैट केस द सेलर विल इनकर लॉसेस. सेलर का तो बेरिश व्यू है तो सेलर क्या सोचेगा कि स्पॉट प्राइस शुड डिक्लाइन, सो ही विल गेन व्हेन स्ट्राइक प्राइस is greater than the spot price. So when strike price is greater than the spot price or spot price is below the strike price, then seller will gain. Okay, but यहाँ पर क्या दिया है? Spot price is higher than the forward or the strike price. So this statement is wrong, क्योंकि हम यहाँ पर seller की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पर buyer के लिए बोलते हैं तो ये statement true होता. Buyer will gain when spot price is greater than strike price. अभी हमने कॉल ऑप्शन के केस में इस चीज को डिस्कस किया था. इन करेंसी फ्यूचर इंट्रा करेंसी स्प्रेड. इंट्रा करेंसी मींस सेम करेंसी. सो से अगर हम यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, स्प्रेड एग्जिस्ट. स्प्रेड का मतलब डिफरेंस. व्हेन अ स्पेक्युलेटर बाय और सेल्स द सेम करेंसी फॉर 2 डिलीवरी डेट्स. नाउ फॉर डिफरेंट डिलीवरी डेट, से आप एक दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और आप एक जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं.
इसकी एक्सपायरी डेट होगी दिसंबर का से लास्ट थर्सडे, इसका एक्सपायरी होगा जनवरी का लास्ट थर्सडे, और हम यहाँ पर एक ही करेंसी डॉलर की बात कर रहे हैं. सो दिस प्राइस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस प्राइस एंड देयर विल बी अ डिफरेंस और स्प्रेड. So spread will exist. This statement is true. So statement 2 is correct, but statement 1 is incorrect. Code 2 is the right answer for this question. So students, if you are preparing for IIT, JEM, CSIR NET or NT NET, then you can buy the study material of Edunkle. This will definitely help you to crack your examination, or you can also download the app of Edunkle from your Google Play Store. On this app you will find a support of more than 250 trained faculties who will help you to solve your queries and to crack your examinations. Thank you very much.